I have to keep it Hindi only, na? Hello, everyone, and a warm welcome to today's episode of AskPB. This is our weekly webinar series to educate our followers and consumers about insurance and investment. Additionally, हमारा Ask PB का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हैं एंड वी विल सॉल्व योर क्वेरीज. इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करा हुआ है, सो प्लीज डू चेक इट आउट. नाउ कमिंग टू टुडेज टॉपिक, हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में एंड मोर स्पेसिफिकली अबाउट पर्सनल वर्सेस कॉर्पोरेट हेल्थ कवरेज. और इस डिस्कशन में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सिद्धार्थ सिंगल. ही इज द बिजनेस हेड ऑफ आवर हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस एट पॉलिसी बाजार. हाय सिद्धार्थ. Hi Simran, how are you? I'm good. It's so nice to have you back on our show. I think this is your third time with us. Yes, it's always lovely to come back to this show and share more and more pointers around health insurance. So looking forward to this session. Yeah, lovely. Now, Siddharth, before we start, of course, I have a whole list of questions that I've prepared for you on the basis of the questions and queries that we receive from our customers on a regular basis. But before we start, I would just like to highlight a stat that I read somewhere recently, which was quite surprising and also a little scary. For the average Indian सैलरीड पर्सन. इट्स लाइक कि इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन रेट इस वक्त 14% है. इसका मतलब है कि हर साल मेडिकल ट्रीटमेंट्स और सर्जरीज का कॉस्ट ऑन एन एवरेज 14% पर बढ़ रहा है. नाउ yeah, that's quite scary. And while most of the employers in India offer corporate health insurance, like most of the major ones at least, relying on simply that coverage is not enough. Because of course अगर आपके पास corporate health cover है तो to some extent आपकी help हो जाती है. But for instance आपके पास 5 लाख का corporate health cover है जो आपको आपकी कंपनी दे रही है, but आपको बिल आ गया for instance 25 लाख का, तो बाकी के 20 लाख आपको अपनी पॉकेट से देने होंगे. लेकिन अगर आपके पास एक पर्सनल हेल्थ कवर भी है जो कि आपने अपने कॉस्ट पर लिया हुआ है, तो ये कॉस्ट वहां से कवर हो जाएगा. And I think this entire equation highlights the importance of having a personal health cover. Now I think my first question to you would be, जो कि हमें बहुत frequently मिलता भी है लोगों से, कि कॉर्पोरेट हेल्थ कवर में और एक पर्सनल हेल्थ कवर में क्या क्या की डिफरेंसेस होते हैं, if there are any that you would like to highlight. Absolutely. See, I think Simran, सबसे पहले तो जो आपने पॉइंट आउट किया फैक्ट कि इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन इज 14%. अगर आप जनरल फूड इन्फ्लेशन को देखेंगे सो दैट इज अराउंड 6-7% जो हम देखते हैं जनरली डेटा ट्रैक करते हैं. मेडिकल इन्फ्लेशन ऑन द अदर हैंड इज मोर देन डबल ऑफ दैट. राइट. What it means is कि अगर आज का एक मेरा ट्रीटमेंट कॉस्ट 1 लाख रुपए लग रहा है तो हो सकता है अगले साल वो 1,14,000 रुपए लगेगा. मतलब विल बी हायर एंड हायर विद ईच पासिंग ईयर. So मतलब and also because India में largely the healthcare system is private dominated. There are obviously government hospitals etc. But अगर आपको you want quick access to healthcare, you want a good quality access to healthcare, the options are more in private sector, lesser in terms of government sector, and it's a known fact. And to have that access to a private sector healthcare जहाँ पे अगर आप किसी का रूम ले सकें, किसी भी बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट अपने लिए या अपनी फैमिली मेंबर के लिए लेना चाहें, तो आज की डेट में यू विल हैव टू स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ. एक अगर आप मैं दिल्ली मुंबई जैसे शहर की बात करूं जहां पे अगर आप मान लीजिए किसी को डेंगू भी हो गया एंड आपको 3 से 4 दिन हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, तो आई वुड से मिनिमम एक हॉस्पिटल में द कॉस्ट कैन बी इजीली 1.5 लाख टू 2 लाख. And just for like a dengue kind of a disease, right? और अगर किसी को कोई और grave condition हो गई, मान लीजिए heart attacks, they have become especially after COVID, what we are seeing is कि काफी young लोगों को भी heart attack हो रहे हैं. तो अगर किसी को कोई heart related ailments हैं, कोई kidney related ailments हैं, so ये expenses can go up to 8-10 lakhs, and with each passing year इसका treatment cost और बढ़ता ही जा रहा है, right? So it's a very scary fact, absolutely.
it's something that we should all be aware about, क्योंकि I think everybody in our jobs, in our business, working hard towards saving money, saving a good fortune for a family. But अगर if there is an untoward incident in the family, तो पूरा का पूरा जो सेविंग्स है, जो आपका कई सालों का सेविंग है, वो ऑटोमेटिकली सिर्फ एक हॉस्पिटलाइजेशन में निकल जाता है. So I can't stress enough कि why everybody should have a health insurance first of all. Now coming to the question specifically, देखिए health insurance I think सबसे पहला important चीज है कि you must have a health insurance, be it any health insurance. And second is कि what type of health insurance is important for the customer. देखिए कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस इज समथिंग जो आपकी कंपनी आपको देती है एज लॉन्ग एज यू आर एम्प्लॉयड विद द कंपनी, यू आर वर्किंग विद द कंपनी, राइट, विच इज अ पार्ट ऑफ समटाइम्स योर CTC और इट्स ओवर एंड अबव बेनिफिट. बट यूजुअली इट्स ऑब्वियसली अ गुड थिंग टू हैव, बट there are major limitations to it. The first major limitation is it's a time bound insurance. So अगर आप employed हैं कंपनी के साथ तो आपको मिल रहा है. The moment you are not on the payroll of the company, तो अब आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए या फैमिली के लिए नहीं है. एंड यूजुअली आपने देखा कि हेल्थ इंश्योरेंस कभी भी काम आ सकता है, बट स्पेशली सो आपको सबसे ज्यादा काम आता है जब आप 55 या 60 की एज पे जाते हो या उससे ऊपर की एज पे जाते हो. That is when you have the highest probability to get ill or to get hospitalized. और उस टाइम पे वो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस आपके साथ नहीं है. तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही. द सेकेंड मेजर प्रॉब्लम जो है कि वो है कि मोस्ट ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है 2 लाख या 3 लाख की कवरेज का ही होता है फॉर द एंटायर फैमिली. सो अगर जैसे कि अभी हमने बात करी कि अगर मान लीजिए किसी एक मेंबर को भी डेंगू हो गया बाई चांस, तो पूरा का पूरा जो सम इंश्योर्ड है पूरे साल का एक ही उसमें हॉस्पिटलाइजेशन में निकल जाएगा. तो अगर कोई बड़ी एलिमेंट होती है, कुछ होती है, तो उसमें सिर्फ 2 लाख या 3 लाख ही आपको शायद मिलेंगे. Baki, you will have to still bear out of your own pocket. So I think these are the major two advantages apart from that other. So I think what we recommend to our viewers and to our customers is it's good to have a corporate health insurance, but it's a must to have a personal health insurance. So personal health insurance is आप जब भी जहाँ भी जिस भी स्टेट में हैं वो हमेशा आपके साथ है. It's lifelong renewable, guaranteed by the regulator. So आप 99 years के भी एज के हो जाएंगे तो you will always have that insurance as a always there to support you. बिल्कुल बिल्कुल, very well explained सिद्धार्थ, thank you so much for that. Now सिद्धार्थ, मैंने अपने पर्सनली सर्कल में ये चीज नोटिस करी कि कोविड के बाद स्पेशली काफी लोग, इवन ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, काफी लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस रियलाइज हुई एंड काफी लोगों ने अपना पर्सनल हेल्थ कवर लेना शुरू कर दिया. नाउ you are in the industry, आपने क्या कोई ट्रेंड्स ऐसे नोटिस करे हैं हेल्थ इंश्योरेंस में जो कि पोस्ट कोविड चेंज हुए हैं इन टर्म्स ऑफ कितने लोग खरीद रहे हैं, किस एज ग्रुप के लोग अब ज्यादा खरीद रहे हैं, या कितना सम इंश्योर्ड आजकल पॉपुलर चल रहा है स्पेशली आफ्टर कोविड? Absolutely. See, I think आपने बिल्कुल सही कहा कि कोविड के बाद से काफी लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड वाज समथिंग बिल्कुल अनअनाउंस्ड, एक ग्लोबल पैंडेमिक जिसमें एवरी पर्सन, एवरी कंट्री, एवरी रीजन गॉट अफेक्टेड. तो उसके बाद से डेफिनेटली हेल्थ इंश्योरेंस में काफी लोगों को अवेयरनेस आई है. And we are seeing more and more queries coming in from the health insurance, and especially from the youngsters, I would say. Usually पहले कोविड से पहले ऐसा समझा जाता था या ऐसा एक परसेप्शन था कि हेल्थ इंश्योरेंस मैं तब खरीदूंगा या खरीदूंगी जब मैं आई एम मोर देन 40 years और 45 years old, right? और if I have a family तभी मैं शायद, if I have kids तभी मैं I will buy a health insurance. But now what is happening is more and more young customers are coming in to purchase health insurance for themselves also and for their parents also. So now what we see is like a good chunk of people, about 25 to 30% of our people are below 30 years of age. So people have realized that medical emergencies can always come unannounced. For example, now especially in northern India, what we see is a huge levels of air pollution, which studies have shown that they can directly impact, they can trigger diabetes, it can trigger heart attacks or brain strokes, etc., which is a very sad situation to be in. So I think the crux of the matter is that more and more people are now getting aware about health insurance, they're inquiring about it. And the good thing, a very good thing, is that even the health insurance companies have realized this. तो बहुत सारे नए products आए हैं, especially youngsters के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही मॉड्यूलर प्रोडक्ट्स आए हैं. एंड हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना हैज बिकम
easier also. अब ऑनलाइन प्रोसेस है, कोई मेडिकल चेकअप्स आपको रिक्वायर्ड नहीं है. आप 1 करोड़ का सम इंश्योर जो कि अब काफी पॉपुलर हो गया, पहले समझा जाता था कि मान लीजिए मैंने 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लिया, मैंने आई एम सफिशिएंटली कवर्ड. बट अगर आप 1 करोड़ का तक का भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं और हार्डली कुछ मे बी 2-3 हजार रुपए एक्स्ट्रा डाल के, सो वो हम देख रहे हैं कि काफी लोग हायर कवरेजेस पे जा रहे हैं. आई थिंक सिद्धार्थ एक ड्राइविंग फैक्टर इस चीज के लिए कि अब ज्यादा यंगस्टर्स भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं इज दैट अभी रिसेंटली पिछले 1 साल में हमने कितने हार्ट अटैक के केसेस सुने हैं. 20s में कोई इंसान जिम में कोलैप्स हो गया, कोई सेलिब्रिटी who's merely like 34-35 years old collapsed in the gym while working out, heart attack से. And the increasing lifestyle diseases in general that's affecting Gen Z and millennials. I think this is also one of the driving factors behind increasing insurance penetration in this particular age group. Yeah, absolutely. So, I think yeah. I think absolutely. Heart attacks which were not heard of before 50 earlier. Now a lot of people in 35 to 40 years of age or even younger age are getting a heart attack. So I think that is also driving more and more people towards कि preventive healthcare को कैसे हम ज़्यादा adopt कर सकें, and similarly how we can ensure a proper health insurance for ourselves and our family. Right. Now Siddharth, usually India में corporate on an average कितना sum insured दे देता है ना health insurance cover to their employees? Like what's the average trend? That depends from company to company, but usually what we have seen is the average on an average will be about 3 lakhs. Some companies would be giving majority of the companies would be giving 2 lakhs or 3 lakhs cover. Very few companies would be giving anything from 5 lakhs or above, because see, health insurance or a group health insurance provided by the company is also a cost to the company. Right. So which is obviously given ताकि आपके जितने employees हैं वो cover हो पाए. See, it's a good thing, but like I said, it's not forever. सबसे पहले it's not customized as per your needs. So for example, अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में मेरे को ओपीडी बेनिफिट्स मिले कि अगर मैं आई हैव अ किड एट होम जिसलिए मेरी डॉक्टर कंसल्टेशन ज़्यादा हो रही है, फार्मेसी ज़्यादा मैं स्पेंड कर रहा हूँ, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस में वो चीज़ मिले, वो चीज़ नहीं हो सकती. बट इफ आई बाय अ पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, आई कैन कस्टमाइज इट. तो आई कैन लेट्स से चूज ओपीडी कवर इन द प्लान. आई कैन चूज कि मैं किस कैटेगरी का रूम लेना चाहूँ, तो आई कैन डू दैट. अगर मैं चाहता हूँ कि कोई वर्ल्ड वाइड कवरेज मैं कहीं भी ट्रीटमेंट करा सकूँ, तो दैट इज समथिंग आई कैन डू इट. सो पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स ऑलवेज गिव यू अ लॉट मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड कि जो आपकी अपनी एक करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको मोल्ड कर सकें. सो आई थिंक दैट वेज इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल टू हैव अ पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ऑलवेज. अगर आपको कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है, इट्स गुड इनफ. आई मीन कीप इट एज अ बैकअप, बट आई थिंक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस इज समथिंग जो आपके पास होना ही होना चाहिए. या तो सिद्धार्थ, मतलब 3 से 5 लाख का कॉर्पोरेट कवरेज किसी के पास है, उसके ऊपर अगर पर्सनल हेल्थ कवर लेना है तो फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स, फॉर इंस्टेंस 18 से 25 साल तक, एंड देन 25 से 40 साल तक, एंड देन 40 से 60 साल तक, एंड देन 60 अबव, इन एज ब्रैकेट्स के लिए आप कितना सम इंश्योर्ड रेकमेंड करेंगे? जी देखिए, दो चीजें हैं. अगर आप मान लीजिए कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस में है, आपके पास है ऑलरेडी, और आपको एक और प्लान लेना चाहते हैं, तो अच्छी बात यह है कि कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ने ये नीड को आइडेंटिफाई किया है. अगर आप कॉर्पोरेट कस्टमर हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ऑफर होता है विच कैन गो अप टू 15%. तो अगर आपके पास कॉर्पोरेट पॉलिसी है, यू आर वर्किंग विद अ रिप्यूटेड कॉर्पोरेट एंड यू ऑलरेडी हैव अ कॉर्पोरेट पॉलिसी, तो आपको जो आप अपना एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेंगे उस पर आपको डिस्काउंट भी मिलता है. So that is something new which has come up for especially keeping corporate customers in mind. Coming back to the question कि कितना cover जरूरी है, what we recommend is minimum 10 lakh rupees cover per member.
अगर मेरी Okay. फैमिली में मान लीजिए मैं 4 मेंबर हैं, तो एटलीस्ट मेरे पास 40 लाख का कवर होना चाहिए एज अ होल। Right. और यूजुअली अगर आप 40 लाख से 1 करोड़ का कवर करेंगे तो उसमें हार्डली आपका एक्सपेंसेस कोई बहुत ज्यादा नहीं होंगे, बट 1 करोड़ अगर आप लेते हैं, सो दैट गिव्स यू अ कंप्लीट पीस ऑफ माइंड। सो बी इट एनी सिचुएशन, let's say god forbid if there's a case of a cancer in a family, Right. जहाँ पे easily 40 50 60 lakhs or even more can get Yeah. spent, so you are covered across almost 99.99% of the cases. So I think this is what we recommend to the customers ki have a very good high sum insured, because always remember जो सबसे पहला पॉइंट हमने बात करी, there is a 14% medical inflation every year. So आज से अगर हम मान लीजिए 10 लाख लेंगे, तो probably in 3 to 4 years that 10 lakh का value would reduce also, because क्योंकि medical Yeah. inflation इतनी बढ़ गई है. So I think in the first go itself, it's very important to take a very high coverage when you're going for a health insurance. Yeah. Yeah. Now, Siddharth, for our viewers जिनके पास already personal health cover है but sum insured enough नहीं है, उन लोगों को आप क्या recommend करेंगे कि वो उसके ऊपर एक super top up ले लें या फिर अपनी policy port करा लें, to a higher sum insured? What would you recommend? See, I think they can do either. Whatever जहाँ पे भी customers think कि हमें benefit है in terms of price. I think अगर मान लीजिए मेरी अगर 5 लाख की पॉलिसी है, तो I can buy a 95 लाख का super top up. अगर मैं अपनी बात करूँ at the age of 35, and if I buy it for myself and my spouse, तो 95 lakh का super top up with a 5 lakh deductible will hardly cost me 1800 rupees or 2000 rupees per year. So उसमें क्या हुआ कि मेरी कवरेज पूरी हो गई till 1 crore, and I am covered across, and it's hardly costing me any money. So I think it's better to go for a super top up plan as a customer. But if you don't want कि मान लीजिए मैं कंपनी ए से मैंने बेस प्लान ले रखा है, कंपनी बी से मैं नहीं चाहता कि मैं सुपर टॉप अप प्लान लेना, तो आई कैन ऑलवेज इंक्रीज माई सम इंश्योर्ड इन द कंपनी ए बेस प्लान. जब भी आपका रिन्यूअल ड्यू है, तो आप अपना सम इंश्योर्ड उसी में बढ़ा सकते हैं प्लान में. बट इट्स इंपॉर्टेंट टू इंश्योर कि आपका सम इंश्योर्ड, जैसा कि मैंने कहा, कि एटलीस्ट 10 लाख रुपीज पर मेंबर होना चाहिए. Yeah, yeah. सिद्धार्थ, एंड इन जनरल हम इसके बारे में काफी अक्सर बात किया करते हैं कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस चलो आपने खरीद लिया, बट जो आपने सम इंश्योर्ड अपने लिए लिया है या जो कवरेज लिया है, वो आपकी लाइफ के हर स्टेज पे आपके लिए काफी नहीं रहेगा, बिकॉज ऑब्वियसली मेडिकल इन्फ्लेशन तो एक फैक्टर है, बट ऑल्सो बिकॉज हमारी नीड्स बदलती रहती हैं. तो कितना फ्रीक्वेंटली किसी को अपना सम इंश्योर्ड रीविजिट करके, रीअसेस करके उसको अपडेट करना चाहिए? Like how frequently should they do it? की बात ये है कि अब काफी सारे जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं, अगर आप क्लेम करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो दे स्टिल प्रोवाइड यू हैंडसम अमाउंट ऑफ नो क्लेम बोनस, और आई वुड से क्यूमुलेटिव बोनस. सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं 10 लाख की पॉलिसी लेता हूँ, अगर मैंने क्लेम किया है या नहीं भी किया है, तो 5 साल में वो पॉलिसी या तो 70 लाख की बन जाएगी, 70 lakhs, और इट कैन गो अप टू इवन इन 8 to 10 years अबाउट 1 crore. सो if I am somebody, जो मैं बहुत पुराने प्लान्स पे हूँ, मान लीजिए मैंने 5-6 साल पहले पॉलिसी ली थी जहाँ पे मेरे को उतना नो क्लेम बोनस या रिन्यूअल पे बोनस नहीं मिल रहा, आई शुड रीवैल्यूएट कि मेरी जो करंट पॉलिसी है, इज इट अपडेटेड राइट नाउ. आई कैन ऑलवेज पोर्ट दैट पॉलिसी इनटू बेटर प्रोडक्ट जो आज की डेट में अवेलेबल है, ताकि मेरे को हर साल मेरा सम इंश्योर्ड ऑटोमेटिकली बढ़ता रहे, क्योंकि मतलब 10 लाख के और एंड देन 10 lakhs and lakhs every year. So I think that is the first thing. And second, अगर आप already ऐसे plans आपने ले रखे हैं, last 1 year या 2 year में आपने अगर ऐसे plans लिए हैं जहाँ पे आपको अच्छा renewal bonus मिलता है, तो I don't think आपको फिर एक अलग से है, because already आपकी coverage with age and with time आपकी बढ़ती जाएगी. So I think it's very important कि every renewal you assess your policy जो आपने ली थी as per your current family needs. Is it enough or not enough? If not enough, you can always port your policy into a different product, in a better product, जहाँ पे आपको benefits ज़्यादा, price भी आपको better मिले. Right. सिद्धार्थ, अभी आपने अपने एक आंसर में बात करी थी while talking about the benefits of having a personal health cover over and above a corporate health cover was कि आप अपने प्लान को कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी जरूरतों के अनुसार. फॉर इंस्टेंस, आप एड ऑन्स
डाल सकते हैं उसमें। तो आपने एक तो बेनिफिट की बात करी थी कि आपको ओपीडी बेनिफिट जो होता है आप अपने पर्सनल हेल्थ कवर में ऐड कर सकते हैं, फार्मेसी बेनिफिट्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कैन यू लिस्ट सम अदर बेनिफिट्स दैट वन कैन मेक यूज ऑफ इफ दे हैव अ एब्सोल्युटली, पर्सनल। देखिए अगर रहा है कि ओपीडी बेनिफिट मैं ऐड कर सकता हूँ, अगर मैं एनुअल हेल्थ चेकअप चाहता हूँ, आई वांट कि मैं हर साल एक आई एनीवे स्पेंड सम मनी ऑन एनुअल हेल्थ चेकअप। काफी लाइक आई सेड अब काफी लोगों में अवेयरनेस आ गई अराउंड मेंटेनिंग अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल। सो अगर मैं एनुअल हेल्थ चेकअप पे स्पेंड करता हूँ तो आई कैन डू दैट। ओपीडी मैंने बात करी ली। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को मेटर्निटी एक सर्टेन लेवल तक कवर हो, देयर आर प्लान जहाँ पे आपको 2 लाख रुपए तक का भी मेटर्निटी बेनिफिट मिलता है, तो वो भी कवर हो सकता है। मान लीजिए हो सकता है मेरी कॉर्पोरेट पॉलिसी में ओनली 30,000 या 35,000 या 40,000 रुपीज का मेटर्निटी बेनिफिट हो, बट आई वांट जहाँ पे ज्यादा कवर हो तो आई कैन डू दैट। सिमिलरली लॉट ऑफ कॉर्पोरेट प्लान्स हैव सम लिमिट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैटरैक्ट सर्जरी के लिए जाता हूँ या कोई नी रिप्लेसमेंट के लिए जाता हूँ, तो उनमें काफी सब लिमिट्स होती हैं कि भाई आप इतना ही खर्चा कर सकते हो। बट अगर मैं कोई पर्सनल प्लान के लिए जा सकता हूँ, आई कैन चूज अ प्लान जहाँ पे किसी तरह की कोई सब लिमिट नहीं होती। I can claim for, let's say, 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, whatever is the actual amount, I can claim up to that. So I think that is one more very beneficial advantage. Lot of corporate health insurance plans also have a limitation कि आप रूम कौन सा ले सकते हो। मान लीजिए बहुत सारी कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस में ये प्रॉब्लम होती है कि आप 5,000 रुपए तक का ही रूम ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप दिल्ली जैसे किसी भी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, तो बहुत लाइकली है कि आपको 5,000 रुपए तक का रूम नहीं मिलेगा। तो बाकी जितना बैलेंस होगा वो आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। जो कि आप अपने पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अगर लेते हैं तो आप उसमें नो रूम रेंट लिमिट अप टू स्वीट रूम भी ले सकते हैं, एंड मतलब यू कैन अवेल बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट विच इज पॉसिबल। सो आई थिंक दीज आर द बेनिफिट्स जो आप इस तरह से अपने लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक या हार्ट पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन अगर आपको है, तो पहले क्या था कि बहुत सारे प्लान्स में, रिटेल प्लान्स में आपको मिनिमम 4 इयर्स सर्व करना ही पड़ता था वेटिंग पीरियड। अब काफी सारी इंश्योरेंस कंपनीज ये बेनिफिट लाई हैं अपने कस्टमर्स के लिए कि अगर आप मान लीजिए डायबिटीज या हाइपरटेंशन का पेशेंट है, तो आपको जो कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा, डे 1 से ही डायबिटीज और हाइपरटेंशन आपका कवर होगा। सो दैट इज अ वेरी गुड एडवांटेज कि अगर मान लीजिए मेरे को डायबिटीज या हाइपरटेंशन है, तो मैं प्रैक्टिकली अगले दिन पे ही क्लेम कर सकता हूँ इफ आई बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, एंड दैट इज लाइफ लॉन्ग. So I think these are the many advantages of a personal health insurance plan. And apart from that, obviously I get a tax benefit as well, which is always there. Yeah. Speaking of tax benefits, Siddharth, tax saving season चल रहा है, मतलब दिसंबर onwards, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, काफी लोग अब इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ढूंढेंगे जिसके थ्रू वो टैक्स बचा सके। एंड वाइल हेल्थ इंश्योरेंस आपको डेफिनेटली सिर्फ टैक्स बचाने के लिए नहीं खरीदना चाहिए, बट इट्स एन एडेड एडवांटेज। तो कितना टैक्स हम बचा सकते हैं सिद्धार्थ हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू? I think health insurance ke through, if you're less than 60 years old, then up to 25,000 rupees is something that you can save, right? And if you have parent, then additional 50,000 is something that you can save. So up to अगर आपके पेरेंट्स 60 years and above हैं और आप अपने लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, तो up to 75,000 rupees in a year you can save on the tax itself. So see, like I said, tax is one aspect of it, but health insurance actually insures you against, or kind of protects you against any kind of a major expense, untoward expense, for which probably आपके पास या किसी एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास पर्सन के पास उतनी सेविंग्स नहीं होंगी to kind of protect you from that kind of a untoward incident. That is where the health insurance is really important. Yeah. Siddharth, lovely explanation. I think most of the questions that I had you have answered, and now I think we should take up some of the questions that our viewers have sent us just now. Sure. During the live. Okay, so the first question is, can we get top up for a corporate health insurance plan? See, like I said, अगर आपके पास एक कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, एग्जांपल आप 5 लाख का है, आप चाहते हैं कि मैं उस 5 लाख की कवरेज को बढ़ाना चाहता हूँ, यू कैन ऑलवेज बाय वन मोर पॉलिसी विच इज कॉल्ड एज सुपर टॉप अप प्लान,
जहाँ पे आप अप टू 95 लाख रुपीस तक का भी सम इंश्योर्ड ले सकते हैं, एंड Yeah. दैट डज नॉट कॉस्ट मच, जैसे कि मैंने अपने एग्जांपल के लिए बताया कि वो शायद 2,000 रुपये कुछ का हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलेगा, जिसमें कि ऐसा होगा कि पहला 5 लाख का एक्सपेंस आप अपने कॉर्पोरेट से क्लेम कर सकते हैं, और उसके बाद का जो भी एक्सपेंस होगा वो आप थ्रू टॉप अप प्लान भी कर सकते हैं क्लेम. So yeah, answer is yes, you can do that, and yeah. So I think if that's a good way to kind of increase your coverage over and above. But like I said, जो आपको first 5 lakh है, that has to be corporate. Yeah. So अगर if tomorrow you want to do a startup, or you I mean unfortunately somebody loses the job or gets retired, then the first 5 lakh आपको अपनी pocket से pay करना होगा. I think that is something one should be mindful about. Right. The next question is, I only have corporate health insurance, but now planning to buy personal health cover as well. I am 30 with no pre-existing disease. Can you suggest some good plans and affordable premium? See, I think it's a very good and it's a very good way of obviously covering yourself. If you can buy a health insurance for yourself, and Yeah. I think you can, since there are no any kind of pre-existing diseases, you can practically choose any plan from any insurance company. There are a whole lot of insurance companies, Star Health, Aditya Birla, HDFC Ergo, Manipal Sikna, Care Health, Niva Bupa. So multiple health insurance companies, and you can choose any plan which suits your requirement. I would recommend go for at least a 1 crore coverage plan. Yeah. That does not cost much at the age of 30, and you can have all the benefits, including health checkups, wellness benefits specifically in the plan. And the best part is कि now what has happened is plans have become modular. तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने प्लान में ये फीचर चाहता हूं या चाहती हूं, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं. यू कैन पे स्लाइटली एक्स्ट्रा प्रीमियम. और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे को मतलब मान लीजिए मैं हो सकता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को एनुअल हेल्थ चेकअप नहीं चाहिए अपनी पॉलिसी में, तो मैं उसको रिमूव कर भी सकता हूँ, और उसके अगेंस्ट में डिस्काउंट ले सकता हूँ. सो आई थिंक एज पर योर बजट, you can choose a health insurance plan. I think at the age of 30, a 1 crore health insurance plan would cost somewhere around 11,000 rupees or 12,000 rupees annually. So I think that's a something that you can look for. Yeah. And दीक्षा, आपका सवाल सिद्धार्थ ने आंसर कर दिया. would just like to add one small thing. अगर आप बाहर अपने कोई नई जैकेट खरीदने जा रहे हैं या शूज खरीदने जा रहे हैं, आप मॉल जाकर एटलीस्ट 2-3 शॉप्स पर चेकआउट करेंगे कि अच्छा यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है, इतने प्राइस में कहाँ पर बेटर प्रोडक्ट मिल रहा है. तो प्लीज आप वही माइंडसेट अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते समय रखिएगा. With the availability of online platforms like Policybazaar, you can compare multiple plans at the same time and see कि आपको कितने प्रीमियम में क्या फीचर्स मिल रहे हैं. So please have that mindset while looking out for a health insurance plan as well. Moving on, the next question is, hi Siddharth, do I need to inform my current insurer about the decision to port my health insurance? See, I think health insurance portability is something that you can do 30 days, up to 45 days before your expiry date. It's not necessary to inform your current insurer कि आप port करने वाले हैं. All you have to do is कि now it's an online process of portability, where it's a very seamless process. All you have to do is choose the other insurer, let's say insurer B. You have to choose apply for it. You have to fill in the proposal form. You have to make the payment. In case there are any medical declarations, you have to give the medical declaration. And if there are any past medical history or anything that you have to submit, and basis that the insurer B will basically accept the portability request, and from there on you can continue the health insurance. So I think it's not necessary for you to it's absolutely not necessary for you to inform your existing insurance company around it. Okay. Nastrenas is saying hi Nastrenas, please send us your question if you have any, and we'd be happy to answer. Joginder is saying very good presentation. Thank you, Joginder. We are glad you're liking the session. Okay, Mohit is asking, if I'm hospitalized and my corporate health insurance has exhausted,
Can I use my individual health insurance at the same time for the same illness? So I think if let's say example I'll take it as कि अगर मेरे पास let's say दो health insurance policy हैं, एक corporate है और एक retail health insurance policy है, and let's say 5 lakh की corporate health insurance policy and another 5 lakh is from retail health insurance policy, and let's assume the bill is 8 lakh rupees. So typically what happens is कि आप पहले insurance company and typically which जो आपका corporate health insurance है उससे you can get a cashless 5 lakh rupees, and then the balance 3 lakh rupees you can file as a reimbursement with your second insurance company, and that is how you get it. But lekin in the complete cashless may not be possible, since there are two different insurance companies involved, and that may not be possible that you get the entire 8 lakh rupees as a cashless. So that is why what we always recommend is when you are, let's say, going for a health insurance plan, instead purchase a health insurance plan grounds up altogether, so that you get a complete cashless experience. In fact, if you're a corporate customer, you get a discount also on the health insurance policy, which is not available to a regular customer who's not a corporate employee. So I think it's better कि आप एक पूरा health insurance plan अपने लिए ले लें, ताकि आपको पूरा grounds up, अगर आप मान लीजिए कोई grave disease hoti hai and there is a major hospitalization, you don't need to pay out from your pocket first and then go for reimbursement. You can instead get it completely cashless. Right. All right. The next question is, what are the main documents I should carry at the time of a claim? See, I think at the time of the claim, if it's a cashless, I think I would kind of bifurcate between planned and unplanned illness. If it's a planned illness, for example, मैं 2-3 दिन 4 दिन बाद एक अपने ट्रीटमेंट के लिए या सर्जरी के लिए एडमिट हो रहा हूँ, first of all I need to inform my health insurance company at least 24 hours in advance that I'm going for so and so this thing. Basis that you get a pre-authorization from the health insurance company, and basis apart from that you don't need to carry any document apart from maybe a cashless card, or in certain cases that's not even required. You just need to know your policy number, or you need to have a policy copy online. That's about it. In case of a unplanned treatment, for example, it's an accidental case or any sudden, maybe it could be a heart attack case or anything, you can get admitted to the hospital. You just need to tell the health your insurance policy number, which insurance company is that. It could be either in the form of a digital format, or it could be probably a hard copy format. At the max you might need to carry your Aadhaar card, which is I think they're available with everybody. And post that, I think within 24 hours after hospitalization in an unplanned scenario, you must inform your health insurance company, so that rest of the claims part can be taken care of. So I think it's very important to understand that the claim process as such, look for a plan that has maximum cashless hospitals, and especially cashless hospital nearby where you live, so that if should there be a hospitalization, you don't need to spend any money from your own pocket, and you can get a complete cashless treatment altogether. All right. The next question is, as a viewer, I want to know, how will I get to know about blacklisted hospitals at the time of an emergency? Okay, so I think it's important to understand that there are blacklisted hospitals which are obviously I would say in the entire country are about 2,500 odd hospitals, and these are usually very, very small hospitals, and they've been blacklisted for a reason that there've been a lot of instances where they've been untoward claims, etc., which have been provided by these blacklisted hospitals. Usually this list is available on your insurance company mobile app or even their website. I think it's important to understand or note that during your regular time that this is a blacklisted hospital near my area. Should there be a case that there's an absolute emergency and obviously you go to the nearest hospital, I think, like I said, within the first 24 hours, when you inform you obviously get the medical treatment first, and once you're stabilized, so within 24 hours, you inform your health insurance company that I've had to kind of get hospitalized, and then probably depending on the situation, you can either relocate, or
pre-intimate the insurance company that I had to take a claim because of so and so reason. And if possible, and then you can probably migrate to a hospital which is either the cashless or in the network of the insurance company. All right. I must say it's very heartening to see so many questions pouring in. इसकी वजह से आज हमें अपना time limit बढ़ाना पड़ा है. But we'll try and take 2 more questions and then wrap up the show, Siddharth. Yeah. The second last question is, corporate policy में PED नहीं देखते हैं. क्या पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस में पहले टेस्ट करवाना पड़ता है? See, I think पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको टेस्ट नहीं करवाना पड़ता. बहुत ही रेयर इंस्टेंस में अगर किसी को कोई कंडीशन होती है, आई वुड से 0.01% केसेस में शायद मेडिकल टेस्ट की जरूरत पड़े. Otherwise there is no medical test in a personal health insurance policy, but it is very important जहाँ पे आपको अपनी पीडी जरूर बतानी चाहिए. कोई पास मेडिकल हिस्ट्री, अगर आपके पास में कोई सर्जरीज हुई हैं, या अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं, या अगर आपकी कोई लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, मान लीजिए स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एटसेट्रा, it's very very important to inform all those conditions completely to the health insurance company while you are purchasing the health insurance, so that claim के time पे आपको कोई problems face ना हो. And it's like buying a health insurance or any kind of insurance is basically a promise between the two parties, the buyer and the health insurance company, that both the parties basically inform each other about the true status, the true facts. So I think it's very important to disclose any kind of a material information. And yes, there are no tests required until it's like very rare case. Yeah. I would also like to add है कि काफी लोग claim rejection से बहुत डरते हैं. I think अगर आप पॉलिसी लेते समय सब कुछ ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज करते हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है. क्लेम्स अप्रूव होते हैं. दिस इज अ फैक्ट. तो आप प्लीज डरिए मत. जस्ट बी ऑनेस्ट अबाउट योर कंडीशंस इफ यू हैव एनी, एंड yeah, there's nothing to worry about. No, I think absolutely, because see, I think there is a general perception कि शायद मेरा claim नहीं होगा approve या मुझे नहीं मिलेंगे पैसे. But the fact of the matter, and if we look at the facts also, there are up to 100% claim settlement ratios are there in the industry. Right. Problem सिर्फ और सिर्फ वहाँ आती है जहाँ पे disclosures सही नहीं हुए for some reason. या तो हमने disclose किया, जो हमारा सेलर था, मेरा एजेंट था बीच में, उसने डिस्क्लोज नहीं किया. एजेंट ने कोई मेरे मान लीजिए रिलेटिव है, उन्होंने बोला कोई बताने की जरूरत नहीं है, आप मत लिखिए प्रपोजल फॉर्म में, कुछ नहीं होता, मैं देख लूंगा. बट दैट डज नॉट हैपन. आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर टू बी ट्रूथफुल अबाउट द फैक्ट्स. अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं, अगर ड्रिंक करते हैं या स्मोक करते हैं, पास में कोई हिस्ट्री मेडिकल हिस्ट्री रही है, कोई सर्जरी हुई है, it's always and always very important to disclose it. Trust you me, there will no issues at all. And secondly, it's very important कि जब भी आप कोई पॉलिसी खरीदते हैं, always go through the policy terms and conditions once you bought the policy, so that आप उसमें जान पाएं कि उसमें आपके क्या allowances हैं, क्या allowances नहीं हैं. It's very clearly written also, so that अगर आपको कोई issues हैं तो आप उसी टाइम कोई corrective action ले सकें. Right. Last question for the day, Siddharth. I think we've already covered this, but if you could just sum up in one line. This person is asking, top up on corporate health insurance or individual health insurance, which is better? I think always individual health insurance is always better. Like I said, top up is a makeshift arrangement that you can always do it on a corporate health insurance. But I think having a complete individual health insurance which is personalized to your needs, it's lifelong renewable, guaranteed by the regulator, which will always be there no matter what, whether you're working in this company, not working in this company, whether your existing company provides only, let's say, 2 lakh health insurance, or any situation. So I think always and always personal health insurance is always is something that a person must have. Lovely. That is a wrap on today's show. Thank you so much, Siddharth, for joining us. Thank you. It was insightful. And thank you so much to everyone else who tuned in. आप लोगों ने time निकाल के join किया, अपने सवाल भेजे. Thank you so much.
बिफोर आई एंड द सेशन आई वुड जस्ट लाइक टू हाईलाइट के आस्क पीबी की तरह हमारी कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं जहाँ पर हम इंश्योरेंस के अराउंड अवेयरनेस के लिए काफ़ी कंटेंट क्रिएट करते हैं. फॉर इंस्टेंस हमारा इंश्योरेंस इनसाइट्स नाम से एक पॉडकास्ट है ऑन स्पॉटिफाई, गाना, विंक, जहाँ पे हम सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं हर इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं. तो आप प्लीज़ उसको भी चेकआउट करिए. And we hope you found this episode useful, and we'll see you next Friday. Thank you so much. Thank you so much, Simran. Thank you, everybody. Bye.